हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेमोरिएबिलिटी। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11 की इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down of simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. तो इसका मतलब जो खाते हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, उसका ब्रेक डाउन होता है एनर्जी फॉर्म करने के लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट के जैसा। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। जो कैटाबोलिक रिएक्शन मीन ब्रेक डाउन, हाँ, तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and carbon dioxide produced to the cell have to be released out. This process of exchange of O2 from the atmospheric with carbon dioxide produced by cell is called breathing, commonly known as respiration. But breathing or respiration completely two different things. And therefore respiratory organ mechanism of breathing vary among different group of animal। हाँ, डिफरेंट एनिमल पर वैरी करती है जो ब्रीथिंग की सिस्टम मैकेनिज्म है। डिपेंड मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो उसका जो हैबिटेट है, मतलब कहाँ रहती है वो पानी में, लैंड में, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऊपर डिपेंड करती है। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलोडेंट, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle and insects have a network of tracheal tubule to transport atmospheric air within the body. A special vascularized structure called gills, हाँ, जो फिश का है वो फिश गिल्स के दौरान जो रेस्पिरेशन करती है, हाँ, उसको बंचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द aquatic arthropod and mollusca where vascularized bag called lunch pulmonary respiration। जो ह्यूमन के है और arthropod and mollusca also have pulmonary respiration are used by the terrestrial form for the exchange of gases among vertebrate. Fishes use gills where amphibians, reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin called cuticle respiration. Of a human respiratory system, we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber is open into the pharynx। pharynx से जो कॉमन पैसेज है जो एयर एंड फूड इंटेक का, हाँ, ए पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर food and air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Larynx is cartilaginous box, which help in sound production and hence called the sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। जो फूड इंटेक करते समय जो लाइनिंग्स में फूड ना चले जाए, इसके लिए जो फ्लैप कवर है वो है एपिग्लॉटिस। हाँ, टैकिया इज ए स्टेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू मिड thoracic cavity which divided at the level of fifth thoracic vertebra। मतलब जो टाकिया है वो फिफ्थ
जो टाकिया है वो फिफ्थ थोरैक की घाटी में जाकर डिवाइडेड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी बॉन्स। ये फिफ्थ फिफ्थ थोरैकिक में आकर डिवाइडेड हो गया है। ये और ये जो लैरिंग्स दिख रही है लाइन कार्टिलेजिनस बॉक्स, और ये एपिग्लॉटिस जो फूड इनटेक के करते समय लैरिंग्स को कवर करती है। सो each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchiole, ending up very terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchi are supported by incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregular, walled and vascularized bag-like structure called alveoli. तो ये है alveoli. सरफेस ऑफ लंग्स पे रहती है। ये है एल्वेओली, स्मॉल एयर बैग टाइप सा है और यूनिट ऑफ लंग्स है एल्वेओली। टोटल नंबर ऑफ एल्वेओली इन बोथ लंग्स 300 मिलियन और एरिया है इसका 70 to 100 मीटर स्क्वायर। सो द branching network of bronchi and alveoli comprise two lungs. We have two lungs which are covered by double layer pleural with the pleural fluid between them. It reduces the friction of lung surface. The outer pleural membrane is close contact with the thoracic. ये लंग्स का जो मेम्ब्रेन है वो है प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके अंदर रहती है प्लूरल फ्लूइड। और हम जब फोर्सफुली लंच में एयर भरते हैं, एयर इनटेक करते हैं, तब टू लंग्स कुछ भी जितना मर्जी आप एयर इनटेक कर लो बट टू लंग्स कोलैप्स नहीं होगा बिकॉज टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स 500 ml जो एयर लंच में रहती है, इसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता लंग्स। Leaning where the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchi constitute the conducting part where the alveoli and their ducts form respiratory or exchange part of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particle, humidifies and also brings the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and carbon dioxide between blood and atmospheric air. तो जब टिश्यू टू ब्लड जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है तो इसको कहते हैं internal respiration. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by dome-shaped diaphragm. ये है the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing, as we cannot directly alter the pulmonary volume. Breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2-rich alveolar air is released out. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन जो होते हैं जो एल्वेओलर मेम्ब्रेन की वजह से होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड की वजह से ही होती है। डिविजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड यूटिलाइज ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड
result in the release of CO2. Cellular respiration as tilt sector.